मैं ये बिल लेकर आया हूं तो मैं मानता हूं कि जम्मू कश्मीर में एक लंबे रक्तपात भरे युग का अंत धारा 370 के समाप्त होने से बनेगा। Decades and decades, downtown area of Srinagar has always been symbolic of unrest, turbulence, turmoil, disturbances, arson, band, hartals, terror attacks, and everything that has to do with the disruption. But now, is it a transition that the downtown in Srinagar, which traditionally is called Sheher-e-Khas, is witnessing? What we are going to tell you is the story of the making of New Kashmir. And in this chapter, it is going to be making of a new downtown, making of the downtown which is all about peace, prosperity, most importantly, Kashmir's art, Kashmir's culture, Kashmir's legacy, education, business, and much more. This is downtown, located on the banks of Jhelum River. They call it Sheher-e-Khas, the largest and the most densely populated area of Srinagar city in the Union Territory of Jammu and Kashmir. The first inhabitants of Srinagar lived there. The buildings, the monuments and the residential homes in downtown Srinagar reflect the heritage architecture, built in late 19th to early 20th century. History has it, terrorism, conflict, demonstrations, stone pelting, encounters. All that eclipsed the old world charm of downtown for many decades. And then history was rewritten on 5th of August 2019 with the abrogation of Article 370, marking the change, the transition from turbulence to transformation. कश्मीर को नॉर्मल बनाने की दिशा में आगे जाएंगे और मुझे भरोसा है कि कुछ ही दिनों में हम हंसता डोलता खेलता कश्मीर देखेंगे और ये जो बम धमाके गोलियां बंदूकें और आतंकवाद जो वहाँ दिख रहा है उसकी जगह हंसते खेलते बच्चे स्कूल के अंदर जाएंगे, बूढ़ों का इलाज भी होता होगा, युवाओं को रोजगारी भी मिलती होगी और दाल लेक के अंदर कोई भी नागरिक किसी भी प्रकार के डर के बगैर आराम से अपने परिवार के साथ जा पाएगा। ऐसे कश्मीर की हम रचना करेंगे। Behind me is a very famous Jama Masjid mosque here in the middle of Nauhata downtown in Srinagar, and this is also one of the prime tourist attractions in the city. Where we are getting you this ground report from is the Jama Masjid market also, which continues to witness business activity, but most important to remember that this is a place which used to be flashpoint of terror, unrest, arson, band calls and much more during early 80s, 90s, and that is something the whole turmoil and turbulence continued for many decades. And on my left you can see bustling business activities in the Jama Masjid market, and this is how a typical weekday here looks like. For long, downtown Srinagar in Kashmir had dubious distinction of being terror-prone. Downtown, in fact, was considered a no-go zone for non-inhabitants. But in last 4 years, the winds of change are visible on ground. These are real people, real voices from downtown itself talking about the change.
I'm right now standing in the middle of the Jama Masjid market, and this is how a weekday here looks like. On my left is a very famous Jama Masjid market, which continues to witness very busy business activity. And on my right is a very famous Jama Masjid mosque situated in Nauhata in the downtown middle of the old city in Srinagar. जामा मस्जिद में आपकी दुकान कैसी चल रही है आजकल? गांव से आता है वो शॉपिंग करने आता है, वो थोड़ा थोड़ा काम चलता है। बंद क्या बंद, ये दुकान अच्छा ठीक हाँ। हालात बिल्कुल ठीक है, कुछ नहीं होता है। हाँ, रेनोवेट किया गवर्नमेंट ने, वो भी अच्छा है। और अगर करेगा मरम्मत वो अच्छा रहेगा। टूरिस्ट? हाँ, टूरिस्ट भी आता है, बहुत आया गया आता है, अंग्रेज भी आता है। The local flavor of Kashmir, its culture, its people, its social milieu. Jamia market and especially the Nauhata area gives you a true picture of what Kashmir and Kashmiri life is all about. So over the years, what has been the shift in trade, business activity, and especially these markets which have operated very inconsistently because of the impact of bands and hartal calls and much more. अब डिवाइड हो रहा है, ठीक हो रहा है। पिछले 2-4 साल से टूरिज्म पर यहाँ पर किया थोड़े से काम, अच्छे ठीक ठाक काम। The Jama Masjid area in the heart of downtown Srinagar is city's most densely packed area. Prior to 2019, it seldom used to be frequented by tourists. The dominant images of downtown of that of stone pelting and band calls or shutdown calls have paved way to normalcy. Normalcy, which now is a new normal here. Shops are now open regular basis, no band calls, no shutdown calls. It's business as usual. So perhaps this is another face of downtown, the interiors of downtown, the interiors of Shahar-e-Khas. This is a regular market here, and you can see people are thronging this marketplace to buy essential items. People here tell me that it is back to normal. They're getting their customers. The business is back in full bloom. Even downtown is back in full bloom. काम किससे चलान? शुक्र है कोई, हम खुदा है। हाँ? हम खुदा है। फर्स्ट क्लास काम चलान? हाँ, बंदा नकीर सोरी से ठीक। असल है कोई क्या बात? हाँ। हड़ताल मौज वे ना साने। So sweet. मार्केट तो बहुत अच्छा है, बहुत जगह से आते हैं। अच्छा, क्या खरीदते हैं? सब कुछ खरीदते हैं, जो जिसको चाहे वो लेता है। हमारे पास बहुत आइटम है। तो अभी ठीक ठाक आप हाँ, कह रहे हैं कि टूरिस्ट बढ़ गए हैं? टूरिस्ट तो बढ़ गए, मगर टूरिस्ट का काम हमारा मत है। हमारा तो लोकल काम है। कोई टूरिस्ट आता है वो लेता है, केसर वेसर कुछ तो ऐसे ही। After having spent close to 2 hours in Jama Masjid area of the downtown, freely interacting with the local Kashmiris, one fact stood out loud and clear, that Kashmir of India has embraced this change ushered in post-abrogation of Article 370. The once epicenter of turmoil in Kashmir Valley has picked fast on commerce and business activity. While trying to examine the turnaround of life in downtown Srinagar, which has always been symbolic of unrest, we will interact with somebody whose shop has been here for more than 40 years. आप बताइए, आप अपना नाम बताएं। आफ्ताब अहमद खान has this textile shop, and this shop has been here since last more than 43 years. 43 years means 4 decades. And this shop, or perhaps Aftab Saab, has been privy
to the decades of unrest and much more. But what has been the shift? What has been the change? आफ्ताब साहब ये बताइए आपका काम कैसा चल रहा है? बिजनेस तो पहले से चल रहा है, अच्छा चल रहा है हमारा, इस मार्केट में चल रहा है, बिल्कुल अच्छा चल रहा है। यहाँ कम से कम है 600 दुकानें हैं, 8000 लोग इधर काम करते हैं। हर एक दुकानदार के पास 4-4, 5-5 सेल्समैन हैं। अब आप उनका देखिए कि अयाल, उनकी फैमिली, ये बनता है 8000। इधर काउंटर काम है, बिल्कुल कैश। गाँवों से बारामूला, कुपवारा, पुलवामा, सोपोर सब इधर आते हैं। क्या टर्नओवर होगा इस मार्केट का अब? जिनको होगा 1-2 करोड़ टर्नओवर है, बिल्कुल कैश टर्नओवर, कैश। क्रेडिट श्रेडिट नहीं, काउंटर काम है इधर। काउंटर बिल्कुल 100%। आप देखिए, आप सुबह आइए या मतलब दिन को आइए, चेक करिए, कस्टमर बहुत आते हैं। 600 to 700 शॉप्स इधर है। मैंने आपको पहले ही बताया 8000 लोग इधर काम करते हैं इस मार्केट, जस्ट लाइक हब, शॉपिंग हब। सब शॉपिंग करके इधर ड्राई फ्रूट से लेकर कपड़े, क्रॉकरी, गोल्ड सब इधर उन्होंने लिया। He's telling us Jamia market has traditionally been hub of business activity, especially there are more than 800 shops and more than 8,000 people are being employed here, including business owners and the salesmen. And people from North, South Kashmir and far-flung areas normally come to Jamia market to buy things. To buy things, everything. अब ये जो disruptions थी पहले, ये खत्म हो गई हैं? जो मतलब जो रुकावटें थी, जो मैं बंद होता था, हाँ वो उसके बारे में। मतलब अब इस वक्त हड़ताल नहीं होती हैं। तो पहले से मतलब 99% नहीं होती, बिल्कुल नहीं होते हैं। पहले तो महीने में 20 दिन होता था हड़ताल, अब नहीं होती। 5 दिन दुकान खुली रहती थी पहले। ये बताइए, क्योंकि ये जो दुकान है, जो मार्केट है, इट इज नेक्स्ट टू जामिया। मुझे एक बात बताइए आप कि अब आपने तो बहुत कुछ देखा, बिल्कुल इस दुकान ने बहुत कुछ देखा, बिल्कुल। लेकिन क्या बेहतर समय है, बेहतर वक्त आया है? बिल्कुल अमन तो है, ये तो ये सीधी बात है, पहले से ही अमन है ना। नहीं, इस इलाके की अगर है, बहुत फर्क है, बहुत अमन है, पहले से बहुत अमन है। There is more to downtown that meets the eye, its legacy. On the banks of Jhelum River, this is Siraj Bazaar area of Zaina Kadal, part of old downtown again. In Srinagar's old city lies this 300-year-old structure. We make it to the small dingy workshop through narrow staircase. Mud walls smeared with soot, replete with cracks here and there. Meet Ghulam Mohammad Zaz, 83 years of age, infusing life into musical instruments since he was just 12 years old. Ghulam Mohammad Zaz has been handcrafting stringed musical instruments for more than 7 decades. The 83-year-old Zaz is perhaps the last santoor maker of Kashmir who, after being trained by his grandfather, is carrying on the legacy of crafting the wood and string instruments. Zaz was awarded the nation's 4th highest civilian award, Padma Shri, on the 74th Republic Day of India. He is the only artist alive in Kashmir making traditional Kashmiri musical instruments like santoor, rabab and sarangi in the Indian Union Territory of Jammu and Kashmir. Finding our team at his doorsteps in the heart of downtown, recipient of Padma Shri Ghulam Mohammad Zaz welcomed us with open arms. Mohammad Zaz opened his heart out, telling us how bullets and pallets have paved way to downtown's old world charm, its lost glory and semblance of peace, all this in last 4 years. This is Old Zanakadal Bridge, Siraj Bazaar, rather iconic Zanakadal, Old Zanakadal Siraj Bazaar, in the heart of downtown city in Srinagar, Kashmir Valley. For many years, during many years of turbulence and conflict-ridden history of Kashmir, downtown, the word downtown
was always identified as the epicenter of arson, band, hartals, encounters, stone pelting. This is what downtown essentially was all about. But now, in the last 4 years, that picture has changed. But to understand why and how the change came into being, it is very essential to trace the roots of Kashmir and look at Kashmir from the eyes of those who have seen multiple generations of turbulence, and before that, when Kashmir thrived, when Kashmir lived up to its reputation of peace, beauty, and much more. What Kashmir was before Article 370 abrogation and after that and much beyond. Zaz साहब, कश्मीर क्या है? कश्मीर की तारीफ किस तरीके से करूं? जो कश्मीर में है वो वर्ल्ड में नहीं है। आज तक तो सारे कहते हैं कश्मीर बेनज़ीर है। उनकी गलत फहमी है। उन्होंने देखा क्या है? कश्मीर तो बेशक बेनज़ीर है, हीरा है। इसका मुकाबला अगर सारी वर्ल्ड में करेगा नहीं मिलेगा। जहाँ जाएंगे सब कुछ है, खाना पीना रहन सहन सब कुछ ठीक, शरीफ आदमी है, ऑनेस्टली है, ये बात है। कश्मीर इसी को कहते हैं। कश्मीर उसको नहीं कहते हैं जहाँ दंगा फसाद है। हाँ, दंगा फसाद तो नहीं है, कोई दंगा फसाद नहीं, कोई कन्य जंग नहीं, कोई पत्थर। हमारे समझ में अब नहीं कहाँ कन्य जंग कहाँ है कहाँ नहीं, ये हम देखते नहीं, हमने देखा नहीं। हाँ, दुकान याला, हाँ, हमारे शीशे भी नहीं तोड़ दिए। अच्छा। देखो ना, ये बात है। स्कूल खुले हैं, एजुकेशन, सब कुछ, कॉलेज, बच्चे कॉलेज जा रहे हैं, सब कुछ खुला है। इस वक्त जो वहाँ पर जो आदमी भी यहाँ आएगा कश्मीर में पीसफुल है। आपने देखा होगा जब आप अकेली रही बेटी, किसी जगह बैठे दिन भर रात के वक्त, कोई नहीं पूछेगा क्या करते हैं क्या नहीं। Zaz tells us how downtown Srinagar was once a prominent terror hotspot that witnessed maximum terror attacks and violence in Kashmir. Zaz and his family also tell us how the very downtown is twining in peace now. He tells us many generations in the valley were trapped in the chains of terror. In fact, he and his family has seen it all. यहाँ आपकी कम से कम 7 पुश्ते आप मुझे बता रही हैं। हाँ, मेरी है 8वीं। You are the 8th generation here. आपने कश्मीर का वो अच्छा समय, फिर बीच में वो बहुत ही दर्दनाक समय, और अब खुशहाली। हाँ। आपने सब कुछ देखा है। आपके जहन में कश्मीर की कैसी वो बेस्ट मेमोरीज कौन सी रहेंगी? ये शहर खास, ये शहर खास, या बदलावने कहीं ज़रूरत, ये पन चारम बटन दोस्त मधुर सारी इकवटे रोजान खुशहाल पे मोहब्बत ओस वारिया। बट मुस्लिम सिख मतलब तुम वो अपारी कन गुरुद्वारा ये पे बोजन फ्लैग इन पे कन या दरिया बटिस पे कन यह गुरुद्वारा अत मंदिर अत जैन मंदिर। आपको आपके पंडित फ्रेंड्स याद हैं? सब वो बाहर है। उनसे सब जिंदे हैं, ऐसी बात नहीं है। हाँ, अच्छी है, हमसे मिलते हैं टेलीफोन। ये काम जो हम करते हैं उन्हीं की बदौलत से करते हैं। कश्मीरी पंडित भी वहाँ पर ठहरे हैं और मुसलमान भी वहाँ पर ठहरे, ऐसी बात नहीं है। लेकिन शुक्र भगवान का अब आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो रहे हैं। आप अभी दिल्ली आए थे, आपको पद्मश्री से नवाजा गया। हाँ? आप प्रधानमंत्री जी से मिले, बातचीत हुई। हाँ, बहुत अच्छा। पहले तो ये बात है कि अचानक कुछ चीज़ मिलना, कि इशू होना कि आपको पद्मश्री मिल रहा है, ये मालूम नहीं पड़ता किस चीज़ के लिए क्यों मिल रहा है। आपकी कुछ बात हुई प्रधानमंत्री जी से? प्रधानमंत्री मिले आप? हाँ, नहीं, मोमेंट क्या था जब? हाँ, प्रधानमंत्री से जब मिले, शिकायत किया, नाम पूछा, खबर खैरियत पूछा, सेकंड में। ये बोलो मामूली बात नहीं है। मैंने कह दिया अच्छी बात है और काम करते रहो।
शुक्र अल्लाह का, बहुत बड़ा ऑनर है। रुपए की कोई बात नहीं है, रुपए मिलते हैं, मिलते भी है भी, जितना है उतना शुक्र अल्लाह का। साहब, वो लोग पूरे देश भर के और दुनिया भर के जो आपको सुन रहे हैं इस वक्त दूरदर्शन के माध्यम से, दूरदर्शन के ज़रिए से आपको देख रहेंगे, आप उनको कश्मीर के बारे में क्या बताना चाहेंगे? मैं उनको कहता हूँ जो जहाँ का वासी है, समंदर के पार का होगा, वो भी सुनेगा, वो भी देखेगा। उनको भी मैं ये एडवाइस दूंगा कि कश्मीर आए। कश्मीर किस चीज़ का नाम है? सब कहते हैं सोने की चिड़िया है। ये वो सोने की चिड़िया नहीं, लूटने वाली चिड़िया है। ऐसी बात नहीं है। हम भी दिल वाले हैं और वो भी दिल वाले हैं। आते हैं यहाँ पर, खरीदते हैं सामान, बाकी खुश खुरम है वो भी, हम भी। और क्या चाहिए? कश्मीर उनको अपने दिल में जगह है ना। अलबत्ता एक चीज़ है, जो मुल्क का ये दयालु बड़ा आदमी होता है, जिम्मेदार आदमी होता है, उसको सारे लोगों पर नज़र होती है। मोदी जी की नज़र है सबों पर। बाकी मैं कुछ नहीं जानता। ख्याल रख रहे हैं वो कश्मीरियों का, सबों का। कश्मीरी क्या चीज़ है? कश्मीर तो एक जगह है, सबों का ख्याल। आकर किस मनसबे पर वो बैठा हुआ है, ये सब कुछ ऊपर वाले का है। बस ये याद रखें। अजान भी हो रही है। Abrogation of Article 370 and the changes that followed included the dismantling of cross-border terror ecosystem once and for all. Well, one of the most heart-to-heart conversations I've ever had with my subject of a story which comes straight from my heart. This, of course, is a New Kashmir story, or the making of New Kashmir, from the heart of downtown. And interacting with Zad Saab, who represents many generations, he's 80 plus. He has seen Kashmir at the peak of the peace and beauty. He has seen the worst of turbulence, bloodshed, and now he tells us that the good times are back, and most importantly, Kashmir doesn't need anything. Kashmir is there to give everything, and that everything from Kashmiris to the rest of the country is the message of love and peace. The time of stagnation is over, and that has something that has given way to prosperity, to development, to peace, and much more. Writing was on the wall. For downtown, for Kashmir, the first light at the end of the tunnel was very visible. Years of stagnation has finally paved way to stability. Perhaps this is the story of transition, from turbulence to transformation. This is the new downtown story. So this is the story of the journey of the last 4 years or more post-abrogation of Article 370. The making of the Naya Kashmir or New Kashmir, which is all about peace and not stove melting. It is all about development and not disruption. It is all about stability and not uncertainty or stagnation. It is all about transformation and not about turbulence. It's not about terror now. It's all about transition to education, to employment, to development, and much more. The peace will prevail, paradise on earth, the beauty of this valley will prevail, and that is the will of the people, and that is the intent of the people. Abrogation of Article 370 has brought in a new lease of life, a new lease of hope for the Kashmiris here. This is the story of the New Kashmir. This is a different story of tourism, flourishing businesses of the interiors of Dal Lake, the dwellers who have businesses in the interiors. Stay with us for more.